Good evening, guys. Welcome back to the TSL. We are here for the game between Just Cricket and Avengers. Requesting Sunil to flip the coin. And tails is the call. Heads it is. Just Cricket have won the toss. They have elected to bat first. Any specific reason for batting first? It's always good to put up a score. Even yesterday's victory that the team had, the morals are pretty high. So we just want to continue with the momentum and see how it flows. How's the team looking like? Same team, not much change. So we'll go with what we have. All the very best. Thank you so much. What would you have done? Actually, I would have batted also. Okay. A good batting side, so we would have put up a nice total without any pressure. But bowling is also fine. The dew will come in later on. So it's still okay. Any particular score in mind you want to restrict them to? Anything around 150, 160 should be a good score. All the very best. Okay. So the news from the center is Just Cricket have won the toss. They have elected to bat first. Thank you, Captain. Good evening all, we welcome you to this PAYTM first games, the Super League match between Just Cricket and the Avengers, and the first ball has been bowled. That's a dot ball. Good evening, gentlemen and ladies, and we welcome you all to this PAYTM first games, the Super League match between the Avengers and Just Cricket. And we apologize for not being able to connect in the first over. The news from the center is that Just Cricket have won the toss and they've elected to bat first. And the first over has been bowled by Gaurav Zavre. And Ram Mane is the new bowler. He's bowling the second over. Vishal Seth on strike.
Well, that's a good delivery by Ram to start his over. Vishal Sheth, the opening batsman, trying to cut it, not succeeding. A loosener from Ram Mane, but in the right channel. And we welcome all our viewers once again to the PAYTM First Games, the Super League match. A wonderful tournament this, being played at the Fatima Cricket Ground in Vidya Vihar vicinity of Mumbai. That's a good delivery, a single taken towards the square leg. Purab on strike. And that's a wonderful delivery by Ram Mane. Brilliant bowling that is. A good start to his over. 3 wonderful deliveries, and this one the best of the lot. Purab trying to steer it, not able to even touch that. A lot of swing being offered here. That's a good shot by Purab, but straight to the fielder there. Cover point. Does well to stop it, and no run scored. So a dot delivery again. 2 dots in a row. So 2 to go, 2 to go. Yes, 2 to go. Okay, 2 to go. Oh, and that's another good delivery this time. He's swinging the ball late, but from the right channel. And the length has been towards the shorter side, but then that's a wonderful shot this time by Purav. Just a single that time, and that's the end of the second over. Two over 6 runs without any loss. That's a good start by the Avengers. They've not got a wicket, but then they've tied the runs. Gaurav Javle coming into bowl his second over, starting off with the first ball, the left armour. That should be a wide, and a wide signal by the umpire. That was swinging into the batsman, but pitched on leg stump, and it took the ball further away from the right hander. Oh, and this time he's picked it. What a shot! This could be a 6. It is a 6. What a shot! And the first boundary scored in style towards the deep square leg region. And Purav coming into the act, picks it up brilliantly. That was a poor delivery without any doubt. Pitching on the leg stump, and that too quite full. Could have been a wide as well if Purav had not got a hold of that. But what a shot. Look at the way he picked. The first boundary of this match, and that too a 6. What a start. They were silent for the first 2 overs, but then immediately they have come into the act. Purab
Wonderful batting that is, and a lot of thinking to be done by the bowler. He's bowling a very poor line. The first two deliveries are wide and then got hit for a 6. Another wide signal by the umpire. This is absolutely directionless bowling. You have to be on target. From the ball one, he changes side, and this time again it should be a wide. It is a wide. He's not able to control the swing. Not a good situation for any captain when his premier bowler struggles the way Gaurav is struggling currently. Oh, this time he bowls a good delivery, but well picked up again. He flicks it towards the backward square leg boundary, but a good chase, and he's coming back for the third. Could be a third. And this is absolutely brilliant running between the wickets. That was a good shot played by Purav. Just have a look at how he picked it. Brilliant. 3 runs taken. Vishal on strike. Oh, and this time he hits it really high in the air. Could be a catch, but he misses that, and this would be a couple of runs. That was a good shot, but really well fielded. Just inside the boundary there. Could have been an absolutely stunning catch there. The mid-off fielder ran all the way back to the boundary, but could not get a hold of that. So 2 runs added to the tally there. Vishal playing really well, playing deliberately in the air, and that was a good shot. And this time again he hits it really well over and above the mid-off fielder for a huge 6. It's a boundary, I beg your pardon. What a shot that was. It's a wonderful shot by Vishal Sheth. He's playing brilliantly. One bounce into the fence. Oh, and this time he picks it up again. Will be a boundary again. Wonderful batting that is. Another 4 this time. Towards the deep mid wicket. What a performance this is by both these batsmen, especially Vishal Sheth. This is absolutely stunning batting by both these batsmen, and a very expensive over for Gaurav here. He's been a lot of runs. Another good shot this time towards the wide of the long on, and there's a fielder there. Just a single. This is wonderful batting, and this over costed really well. A lot of runs scored in this over, just the third over. And 23
3 runs scored in this over. The score was 6 runs in 2 overs and 29 for no loss. What a start that is. Wow. And a lot of wides also being bowled in that over. So not a good piece of bowling at all by the bowler. Needs to rethink his strategy and probably needs to be rested as well for some time. Vishal Sheth has destroyed his figures. 2 overs and 26 runs for Gaurav. Gaurang Javle, 26 for no loss, no wicket in 2 overs. The score is 29 for no loss in 3 overs. And Ram Mane coming into bowl his next over, the 4th of the innings. And Vishal back on strike after taking the single on the last delivery. Ram Mane to Vishal. That's a good piece of bowling. Wonderful line and immaculate length there, inviting him to hit. Oh, and he tries to hit a big one again this time. And this is in the gap and over the short third man fielder for a boundary again towards the third man. This is absolutely brilliant batting. And he is taking full charge here. Vishal Sheth. Absolutely brilliant batting. Another boundary scored. And just a single this time. This is good running between the wickets. Short mid wicket field. Stops that but couldn't stop the single. That's a good delivery by Ram Mane. But that's a wide signal by the umpire. So probably a bit too wide. But that was a good delivery for sure. Pura one strike. Another single taken on the last delivery, and this time it seems this will be a dot delivery again, and it is a dot delivery. That's a good shot this time. Seems that's a boundary again, and it is a boundary. Vishal is on fire. Another good shot played by him. That's the end of the 4th over and 40 without loss. And what a shot by Vishal. Absolutely brilliant batting there by Vishal. He's raced to 22 of just 15 deliveries. Just have a look at that shot. What a shot that was. He's just trying to
Hit every ball out of the ground. This is brutal batting. A boundary towards the long on, but he was trying for nothing less than a 6 there. He's got a lot of bottom end power as well. So Vishal making his intentions really, really clear. Ravi Chavan is the new bowler, the captain of the Avengers. Lost the toss today and was invited to bowl first. He starts off well. A genuine all-rounder and one of the best players in the team. The most experienced as well as. This is good wicket keeping by the keeper as well. Ravi bowling in the right channel. Oh, and this time he brings it in brilliantly. That spun a lot. That was played well by Purav. And Vishal back on strike. He has played absolutely brilliantly. That was a good delivery by Ravi. Oh, and that's a good shot played by Vishal, but straight to the fielder there at point. No run taken. That's a good shot played towards the long end. That's a boundary. Oh, that was probably a sloppy bit of work as well. He was not prepared for that power there, the fielder at the mid off. That was a very short delivery, poor delivery that was, but Vishal played it well. This should have been stopped by the mid off fielder. He missed that. Oh, and this time he just blasted towards the boundary, but that was good stop by the long on fielder. Played it really straight. Vishal is on fire. He's hitting every delivery with a lot of confidence, and that's the end of the 5th over. The score is 46 without loss. And we'll be back after a short commercial break. Stay tuned, viewers. क्या पता कौन कैसे खेलता है? अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। Harshad Patkar is the new bowler. And to the pleasure of our viewers, just as we have the Hindi commentary in all matches of the TSL, today also we'll be presenting the Hindi commentary for all our viewers who are watching this match live on the PAYTM First Games app. A brilliant start by Just Cricket team, and they have a
Very solid batting lineup, led by Vishal Sheth and Purav Nanavati. Both of them playing brilliantly. 5 overs, 46 without loss. Harshad Patkar to bowl the 6th over. That's a good shot played, but straight to the fielder. The cover point does well there. That's a good start by Harshad Patkar. 2 dot deliveries. 14th पे विशाल 27 और total score 46 वो overs कितना हुआ 5.2 5.2 score 46 5.3 46 That's a poor bit of fielding, and they've given a single there. 347 Could have been a dot delivery, but instead they've given a single. 88 And Purav back on strike. Vishal moves on to 28 of just 21 deliveries. A single taken there. In the onside again. That's a wonderful start by Harshad Patkar to his first over. Oh, and this could be a big one this time. Picked it up brilliantly. And that's a huge hit. A big 6 by Vishal this time. Straight down the ground. What a shot. And the long on fielder, just a spectator there. Just have a look at that replay. That was a slow delivery and picked up brilliantly by Vishal Sheth. He's got some power in his arms. Just have a look at that distance and the height. All the way for a huge 6. And Harshad Patkar's brilliant over has been spoiled with a wonderful hit by Vishal. one to go last ball And that's a wide signal wide के बाद by the umpire. score is 50 Too wide outside the off stump. इसने 6 मारा And that's another wide this time. बोलो ना In a span of 2 deliveries, the over has changed completely. 10 already of this over. Another easy single taken. That's the end of the 6th over. The score is 57 for the loss of no wickets. So wonderful start by both these two batsmen, and we'll now request our Hindi commentator to join in and present his Hindi commentary to all you viewers. We welcome you back to the commentary box, Shalin.
स्वागत करता हूं मैं अपने सभी दर्शकों का इस पेटीएम फर्स्ट गेम्स द सुपर लीग के मैच में, और बहुत बहुत अभिनंदन और अभिवादन करते हैं हमारी कमेंट्री टीम की तरफ से आप सभी का। जस्ट क्रिकेट की ज़बरदस्त धुआंधार बल्लेबाजी हुई है। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। 7 ओवर के बाद 66 रन स्कोर है। माफ़ी चाहते हैं अपने दर्शकों से, कुछ देर के लिए हम आपसे बिछड़ गए थे तकनीकी खराबी के कारण, और अब सारी खराबियां सुलझ गई हैं ऐसा लग रहा है। जस्ट क्रिकेट की तारीफ करनी होगी, लगभग 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से खेल रहे हैं। 7 ओवर 66 रन। और
और ये ज़बरदस्त प्रहार एक बार फिर से, लेकिन इस बार डीप कवर लगा के रखा हुआ है इस शॉट के लिए। एक ही रन मिलेगा और दूसरे के लिए विशाल आना चाह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर चूक हुई थोड़ी सी क्षेत्र रक्षक से। और यहां पर ये स्टंपिंग हो गए हैं। जी हां, जबरदस्त गेंदबाजी अनिल कोठा की। ये वाइड गेंद थी लेकिन उन्होंने भांप लिया। ये देखिए, नहीं आराम से स्टंपिंग कर दी यहां पर विकेट कीपर ने। पहला विकेट यहां पर अनिल कोठा ने ले लिया है। बढ़िया गेंदबाजी कहूंगा मैं, भले ही वाइड गेंद थी ये। पहला विकेट यहां पर जस्ट क्रिकेट का गिरता हुआ। 7.1 ओवर में 68 रन की पार्टनरशिप साझेदारी के बाद पहला विकेट गिरा। तारीफ करनी होगी पूरब नानावती की। 23 रन बनाया उन्होंने 18 गेंदों पर। गणेश राय हैं नए बल्लेबाज और ये बहुत ही अजीब सी गेंद, और शायद बाय मिलेगा यहाँ पर ऐसा लग रहा है। विकेट कीपर से भी चूक हो गई। वाइड गेंद है ये, तो 2 रन मिल गए। 1 रन भी लिया बाय का, वाइड के 2 रन हो गए। गणेश ने खाता खोला 1 रन लेकर। गणेश राय, और इस बार फिर से लग रहा है वाइड होगी है। जी हाँ, दिशाहीन गेंदबाजी है ये। हालांकि विकेट ले लिया इन्होंने, विकेट भी वाइड पे लिया था और ये बढ़िया तरीके से पीछा करा गेंद का। और ये 2 रन लिए वाइड पर, 3 रन मिल गए। खराब गेंदबाजी। इतने अतिरिक्त रन आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, 2 गेंदें हुई और 9 रन दे चुके हैं, भले ही विकेट ले लिया है। शुरुआत बहुत अच्छी थी इस ओवर की, विकेट लिया था लेकिन उसके बाद वाइड पे वाइड, वाइड पे वाइड। और ये लगातार वाइड ऐसे डालेंगे तो कप्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और ये बढ़िया गेंदबाजी, डॉट गेंद। और एक बार फिर से वाइड। ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर लाना चाह रहे हैं और 10 रन दे चुके हैं इस प्रयास में अभी तक। ये बढ़िया गेंद, ये बढ़िया गेंद, ये करना चाह रहे थे इतनी देर से। चलिए, दे रहा है दुरुस्त है, सफलता मिली
गेंद को सही जगह रखने में। और ये खराब गेंद, इसे पंच किया स्वीपर कवर के दिशा में। एक रन। अठारह 77 रन 8 ओवर के बाद। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति हुई। विशाल वापस स्ट्राइक पर। अनिल कोठा का एक सफल लेकिन बहुत ही महंगा ओवर। 11 रन और उसमें अतिरिक्त रन और अतिरिक्त गेंदें इतनी ज़्यादा कि एक अच्छा संकेत नहीं है। ध्रुवीर गांधी आए हैं नए गेंदबाज, बहुत ही समझदार और ज़बरदस्त गेंदबाज हैं, चपल हैं, चतुर भी बहुत हैं। हालांकि शुरुआत उतनी अच्छी नहीं, छोटी गेंद से शुरुआत। 1 ही रन होगा लॉन्ग ऑन की दिशा में। विशाल का करारा प्रहार। और ऐसा लगा कि आखिरी में मारने का सोचा इन्होंने, पहले सोचा छोड़ दें और वाइड का अतिरिक्त रन ले लें, लेकिन शायद उन्हें एहसास हुआ कि बहुत आगे आ चुके हैं ऑफ स्टंप की तरफ, तो वाइड शायद नहीं मिलेगी। अंत में शॉट खेला और बढ़िया सोच है बल्लेबाज की। और ये बहुत ही खराब गेंदबाजी, बहुत छोटी गेंद है और इस बार करारा प्रहार अच्छी तरह से रोका। बढ़िया क्षेत्ररक्षण। 2 रन के लिए वापस आ रहे हैं गणेश, और विशाल यहां पर फंस सकते थे, बच गए। जी नहीं, अभी नहीं बचे हैं। तीसरे अंपायर का निर्णय मांगा गया है। ऑन फील्ड अंपायर ने रेफर किया है तीसरे अंपायर को, देखते हैं। और ये नॉट आउट है। और जैसा कि आपने देखा, आराम से पहुंच गए थे, नॉट आउट है। और तीसरे अंपायर का भी निर्णय, जी हाँ, और रिप्ले में साफ दिख रहा था कि नॉट आउट है।
ध्रुवीर की अगली गेंद, 1 रन लिया था पिछली गेंद पर, और ये इस बार यहाँ पर हवा में खेला शॉट, और एक खराब क्षेत्र रक्षण, 4 रन के लिए गेंद चली गई। जी हाँ, ऐसे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको ही बाद में ये रन बनाने हैं, लक्ष्य का पीछा करना है। 9 ओवर के बाद 86 रन हो गया स्कोर। ये देखिए शॉट, एक टिप्पा खाया और लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने बहुत ही खराब ये निर्णय लिया यहाँ पर, जज नहीं कर पाए सही से, और 4 रन के लिए गेंद जाती हुई। 9 ओवर में 86 रन, क्या ज़बरदस्त यहाँ पर बल्लेबाजी हुई है। और ये अनिल का दूसरा ओवर, बहुत ही खराब शुरुआत इस ओवर की भी। अनिल कोठा पिच के भी बाहर डाली है गेंद। इन्होंने अभी तक 1 ओवर कराया है और करीबन 13-14 गेंदें डाल चुके हैं, और सिर्फ एक गेंद ऐसी थी जो इनकी ज़बरदस्त थी, और एक गेंद जिसपे इन्हें विकेट मिला। 2 गेंदें ऐसी थी और जिसपे विकेट मिला वो भी वाइड थी। तो खासा नुकसान भी कर रहे हैं अपने दल का। विकेट तो इन्होंने लिया है, ये इनकी तारीफ करनी होगी यहाँ पर, लेकिन इतनी वाइड गेंदें डालकर अच्छा खासा नुकसान कर रहे हैं। ताकि ये बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि नियंत्रण नहीं होता है गेंद पर, गेंदबाज का। और ज़बरदस्त ये गेंदबाजी। विशाल स्ट्राइक पर अनिल कोठा, अच्छी वापसी करते हुए इस ओवर में। अभी तक एक ही वाइड गई है पिछले ओवर के मुकाबले। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया शॉट विशाल का, और सीधे इस बार हाथ में रन आउट हो सकते हैं, लेकिन शायद उनके हाथ से गेंद लगी, गिल्ली उड़ी, और रन आउट का यहां पर जो मौका था वो चूक गया। जी नहीं, हाथ से नहीं लगी थी, थ्रो बढ़िया था, लेकिन तब तक पहुंच गए थे। आप देख सकते हैं रिप्ले में इतना बढ़िया ये थ्रो। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त यहां पर क्षेत्र रक्षण था। और एक बार फिर खराब गेंदबाजी, लचर गेंदबाजी है, दिशाहीन गेंदबाजी। पिच के बाहर अगर आपकी गेंदों का बार बार टिप्पा जा रहा है तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो कप्तान के लिए मुश्किलें आप बढ़ा देते हैं गेंदबाज के तौर पर, भले ही आपने विकेट भी क्यों ना लिया हो। विचार विमर्श चलता हुआ वहां। बढ़िया शॉट, इस बार हवा में खेला हुआ शॉट, और क्या ये आउट होंगे? छोड़ दिया है कैच। तेज प्रहार था और अच्छी कोशिश, लेकिन ये कैच लेना चाहिए था। हाथ में ये कैच आया था, प्रहार तेज था हालांकि। तो रिप्ले दिखाएंगे, ये देखिए। और ये बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन 1 रन ले लिया। और शायद इसलिए कप्तान भी इन्हीं के साथ बने हुए हैं गेंदबाजी के तौर पर, क्योंकि उन्हें पता है कि विकेट अगर लेना है तो मौके इनके ओवरों में ही बन रहे हैं। हालांकि रन अच्छे खासे दे रहे हैं ये, लेकिन इस बार तो कैच होना चाहिए था। दुर्भाग्यपूर्ण रहा ये गेंदबाज के लिए। कवर्स पे सीधा कैच, और एक बार फिर से वाइड। जी हाँ, अंपायर ने वाइड दी। बहुत ही
मुश्किल में होंगे इनके कप्तान। 44 पर आ गए विशाल शेख, ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं और एवेंजर्स के कप्तान सोचते होंगे कि क्या करूं मैं, को गेंदबाजी दूं या नहीं दूं आगे। हर ओवर में तो ये विकेट की एक नींव डाल देते हैं, लेकिन इतनी अगर वाइड्स डालेंगे, इतने अतिरिक्त रन देंगे, उतने ही अतिरिक्त गेंदें भी करानी पड़ती हैं। तो 20 ओवर के मैच को आप पहले ही 22-23 ओवर का बना चुके हैं पहली पारी जो है। और ये 10 ओवर के बाद स्कोर है 95 रन एक विकेट के नुकसान पर। और अंपायरों का निर्देश ड्रिंक्स ब्रेक का। एक ब्रेक लेंगे और वापस जुड़ेंगे आपके साथ थोड़े से विराम के बाद। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। स्वागत करते हैं आपका ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। और ध्रुवीर गांधी दूसरा ओवर लेकर आते हुए, बहुत ही लचर गेंदबाजी रही है आज द एवेंजर्स के दल की। ज़बरदस्त यहाँ पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। 4 कैमरे लगाए हुए हैं इस प्रतियोगिता के लिए, टूर्नामेंट के लिए। बढ़िया शुरुआत है यहाँ पर विशाल की इस ओवर को। डीप मिड विकेट पर 1 रन।
इस बार तेजी से एक रन लेने की कोशिश और यहां पर रन आउट का एक मौका, लेकिन शायद यहां पर पहुंच गए विशाल। बढ़िया शॉट ये, इस बार फिर से क्षेत्र रक्षक के हाथ में और इस बार आउट हो सकते थे, यहां पर चूक गए लेकिन गेंदबाज। कोशिश की थी वहां पर अच्छी गेंदबाज ने ध्रुवीर गांधी, लेकिन शायद स्टंप पर लगाया नहीं उन्होंने गेंद को। बहुत ही जबरदस्त प्रहार इस बार, और ये खराब क्षेत्र रक्षण, 4 रन यहां पर दे दिए। एक ही रन होना चाहिए था और ये 50 रन पूरे विशाल के और 100 रन जस्ट क्रिकेट टीम के भी पूरे इसी चौके के साथ। ये देखिए कितना खराब प्रयास वहां पर, ओ ये तो रोकना चाहिए था, बहुत ही लचर क्षेत्र रक्षण। जबरदस्त प्रहार इस बार, बहुत ही बढ़िया ये क्षेत्र रक्षण एक्स्ट्रा कवर्स पर। बहुत ही जबरदस्त ये शॉट खेला है और क्या ये छक्का है? जी हाँ, 6 रन फ्लैट छक्का, क्या बात है। विशाल शेठ की तारीफ करनी होगी। और 108 रन स्कोर हो गया है 11 ओवरों के बाद, और विशाल शेठ ने क्या जबरदस्त प्रहार किया डीप मिड विकेट पर, 6 रन फ्लैट छक्का। आपको दिखाएंगे रीप्ले। बहुत बढ़िया शॉट 6 रन के लिए, छोटी गेंद और उसका भरपूर फायदा उठाया। और 11 ओवर के बाद 108 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी है विशाल के बल्ले से। और इस बार कैच आउट होते हुए यहां पर गणेश, बढ़िया यहां पर गेंदबाजी अमित की, आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश गणेश की, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर राम माने ने आसान सा कैच पकड़ लिया और बढ़िया क्षेत्र रक्षण। गणेश राय 10 रन बनाकर आउट होते हुए 8 गेंदों पर, और 108 पर 2, 11.1 ओवरों के बाद। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। बहुत ही जबरदस्त ये गेंदबाजी अमित कोठा की। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ, अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन
और ये वापस खराब गेंदों का सिलसिला शुरू हुआ। विशाल स्ट्राइक पर चेतन कपूर आए हैं, नए बल्लेबाज, खतरनाक बल्लेबाज हैं चेतन कपूर। इस बार बढ़िया गेंदबाजी और 1 रन स्वीपर कवर के क्षेत्र में। जी हाँ, बढ़िया गेंदबाजी इस बार और 1 रन फिर से ले लिया। चेतन कपूर ने अपना खाता खोला पहली गेंद पर, शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ 1 रन लेकर। अरे इधर हवा चल रहा है, इधर उधर चलाओ ना थोड़ा सा, आग नहीं लगने वाले। एक और सिंगल यहां पर लिया कवर्स के क्षेत्र में विशाल ने। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर, हालांकि अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है। और ये हवा में खिला हुआ बड़ा शॉट, क्या यहां पर ये 2 रन लेंगे। जी हां, दूसरे रन के लिए आते हुए चेतन कपूर तेजी से और आराम से 2 रन ले लिए। ऐसा लग रहा था कि कैच हो सकता है, लेकिन गैप में था यह शॉट। चेतन कपूर भी बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। और ये खराब गेंद, वाइड गेंद एक बार फिर से। बढ़िया शॉट इस बार, करारा प्रहार, क्या ये चौका होगा? जी नहीं, यहां पर क्षेत्र रक्षण तो किया, लेकिन वहां पर थोड़ी सी चूक हुई और 2 रन के लिए वापस आते हुए चेतन और विशाल। और बढ़िया यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों बल्लेबाजों की। और ये ओवर की समाप्ति 12 ओवर के बाद 117 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विमर्शन आए हैं अब नए गेंदबाज और लगभग 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है। बहुत ही जबरदस्त ये बल्लेबाजी, और चेतन कपूर ने भी आते ही हाथ खोलना शुरू करा है। 5 रन बना चुके हैं वो 3 गेंदों पर। दोनों खिलाड़ी बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी। विशाल शेठ 58 पर खेल रहे हैं 43 गेंदों के बाद। विमर्शन की एक खराब शुरुआत, वाइड से शुरुआत। अच्छे खिलाड़ी विमर्शन, हालांकि चुनौती होगी इन गेंद बल्लेबाजों को गेंदबाजी डालना। बढ़िया शॉट यहां पर, क्या ये चौका होगा? जी हां, ये गैप में खिला हुआ शॉट और ये 4 रन के लिए जाती हुई गेंद। डीप पॉइंट क्षेत्र में 4 रन। जबरदस्त यहां पर प्रहार, खराब गेंद थी, बहुत समय दिया यहां पर कट करने के लिए और करारा पंच किया यहां पर। जी हां, जबरदस्त कट शॉट।
बहुत ही बाहर गेंद थी ऑफ स्टंप के और बल्लेबाज ने धन्यवाद कहते हुए इस गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया, सीमा रेखा के पार 4 रन। विशाल शेठ 62 पर आ गए हैं सिर्फ 44 गेंदों के बाद। विमर्शन को कुछ खास करना होगा इस ओवर में, क्षमता है उनमें, हालांकि अभी तक खराब गेंदबाजी की है। एक गेंद वाइड और एक गेंद पे चौका, वो भी बाहर की गेंद। और ये बढ़िया गेंद थी मारने के लिए, लेकिन चूक गए इस बार विशाल, और उन्हें पता है ये फुल टॉस थी ये। हालांकि विमर्शन की भी तारीफ करनी होगी, डर नहीं रहे हैं गेंद को हवा में खिलाने से। शायद यही, और बड़ा शॉट, ये जबरदस्त प्रहार, लेकिन आउट हो गए। और विमर्शन की इसी गेंदबाजी की मैं तारीफ कर रहा था, क्षमता है इनमें, और आते ही विकेट ले लिया। हर्षद पाटकर ने बढ़िया कैच लॉन्ग ऑन की सीमा रेखा के थोड़ा सा ही अंदर पकड़ा, और विमर्शन को ये पहली सफलता। और ये देखिए क्या खुशी है इनके चेहरे पर, और कप्तान भी खासे खुश होंगे। बढ़िया ये गेंदबाजी में बदलाव, और आते ही विशाल शेठ को आउट कर दिया विमर्शन ने। वाह, ऐसा लगा बड़ा शॉट खेल रहे हैं, और था भी बड़ा शॉट, लेकिन थोड़ा सा और ऊंचा होता तो 6 रन जाता, लेकिन सीधे हर्षद पाटकर के हाथ में। और ये तीसरा विकेट गिरता हुआ 122 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रिप्ले दिखाएंगे आपको, ये देखिए बढ़िया गेंदबाजी, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन हर्षद पाटकर के हाथ में सीधे। बहुत बढ़िया कैच है, आसान नहीं होते इतने तेज शॉट्स पर कैच लेना। और नए बल्लेबाज आते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ, अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। नए बल्लेबाज आए हैं, मुकुंद मुकुंद जलान, माफ कीजिएगा। विमर्शन मुकुंद को 3 विकेट गिर चुके हैं। बढ़िया गेंदबाजी है, मुकुंद ने कट करने की कोशिश की, लेकिन बढ़िया लाइन और लेंथ। और इस बार ये रन आउट हो सकते थे, लेकिन अच्छा निर्णय और बढ़िया बैकिंग आप यहाँ पर, बहुत बढ़िया बैकअप, तारीफ करनी होगी। खराब थ्रो था, विमर्शन की अगली गेंद, और इस बार ये कट किया, स्वीपर कवर के क्षेत्र में 1 रन, सर्कल के अंदर ही रोका। बढ़िया क्षेत्र रक्षण और बहुत बढ़िया ओवर विमर्शन का, तारीफ करनी होगी। 13 ओवर के बाद 123 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और एक बहुत ही सफल ओवर। विशाल शेठ को पेवेलियन भेजा विमर्शन ने। विमर्शन नादर 1 ओवर 6 रन और 1 विकेट, इससे बढ़िया शुरुआत तो इनके कप्तान भी उम्मीद नहीं कर रहे होंगे। इतना महत्वपूर्ण विकेट लेके दिया है कप्तान को और अपनी टीम को विमर्शन ने। रवि चौहान आए अगला ओवर लेके, और हम अनुरोध करेंगे अपने अंग्रेजी कमेंटेटर से कि अब वो आए कमेंट्री बॉक्स में और आप सभी का मनोरंजन करें अपनी अंग्रेजी कमेंट्री से। Thank you so much, Shaleen, for your wonderful commentary. And Vimarsan bowling a wonderful first over, taking a very important wicket.
Oh, and Ravi Chauhan bowling a superb delivery to start his third over. He's bowled well. That's a good shot towards the cover, just a single there. और ये अच्छी गेंद थी और यहां पर चूक गए बल्लेबाज चेतन कपूर. और इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, हालांकि बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 2 रन मिलेंगे और तीसरे रन के लिए भी आने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर मुकुंद, लेकिन 2 ही मिलेंगे. Well, that's a wonderful shot by Chetan. Thanks Shalin for joining in. It's been a long time we've had the English Hindi combination in the commentary box. रवि चौहान की अगली गेंद, जबरदस्त प्रहार इस बार और 4 रन डीप स्क्वायर लेग की दिशा में. Absolutely brilliant this by Chetan Kapoor, swept really hard and the deep square leg had no chance this time. A boundary scored. And already 130 on the board, 130 for 3, 13.5 overs, 6.1 left. A lot of deliveries left, and Chetan Kapoor, if he keeps on going the way he is, they could easily touch the 200 mark. Another good shot this time towards the backward square leg, could be another couple. जी हाँ, 2 आसान से रन इस बार फिर से बटोरे चेतन ने. ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 14 ओवर के बाद 132 रन 3 विकेट के नुकसान पर. हम अनुरोध करेंगे अपने अंग्रेजी कमेंटेटर से कि वो जारी रखें अंग्रेजी में कमेंट्री, और एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ. धन्यवाद. और सचिन जी करिए सिलेक्ट. मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है. अरे रे सो सैड. सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प. तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ. अब खेलने में मजा आएगा. सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए. पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके जीतो जम के. इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है. कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें. Vimerson bowling his next over. That's a good shot played by Mukund, just a single though. Arshad Patkar in the long on region stops it and fumbles a bit, but no damage done, just a single. But this time he plays it really well, Chetan Kapoor. Oh, and that's a really sloppy work there by
the long off fielder, Ram Mane. And this is the second time he's missing the ball there. Has given away 6 extra runs, 3 every time when it reaches the boundary. Just a single that was, but have a look at, oh, that's a really bad technique to stop a delivery. Not at all the right way. That is really sloppy. The boundary scored. Rather gifted. Another good shot by Chetan. Just a single this time. Ramane fields it this time, and this was relatively easy as well, but the score has reached 138. Just 3 wickets down and 14.3 overs only. 5.5 overs left in this innings. This is a good delivery by Vimerson, coming back really nicely. He's tossing it up deliberately, inviting the batsman to hit it in the air. This is wonderful bowling by Vimerson. Thinking hat. He always has as a cricketer. A very easy going run up and a very simple action as well, but the effectiveness is there. That's what matters. Another good delivery this time. Tossing it up, and he's trying to take the single there. That was close. That was a chance of a run out, but he missed it there. Oh, and this time he's bowled him. This is wonderful bowling by Vimerson and Chetan Kapoor. Not reading that delivery properly, and has lost his leg stump and his wicket as well. That is absolutely brilliant bowling. He's tossed it up again, and that has done wonders for him today. Vimerson, the pick of the bowlers, and the second wicket taken by him. Just have a look how he got deceived there. Oh, and that's a wonderful delivery. It hit the leg stump, and Chetan Kapoor was stunned. And we've got Vijay Singh now, who's probably the biggest hitters in the TSL. If not the biggest, one of the biggest for sure. Scores a lot of runs whenever he plays, and he scored a lot of runs in this tournament as well. And when he hits the ball, it stays hit. So 139 for 4 after 15 overs, last 5 overs left, and what a time for Vijay to come. He can just accelerate from ball 1. Ravi Chavan coming into bowl his last over. He's bowled well, 24 without any wicket, but he's bowled well overall. Not easy for any bowler to bowl against such a powerhouse of a batting lineup like Just Cricket. That's a good delivery, and Mukund trying to make some room to play it towards the covers, but the ball spinning in, and that was a wrong judgment by Mukul. He should have come across the off stump, tried to play it towards the fine leg region or the square leg region. Spinning the ball from outside the off stump. This time again he tries to do the same, but no run taken. Spinning the ball from middle stump towards the leg stump, so he should be shuffling across the off stump instead of going back towards the leg stump, and that's the reason he's not able to take singles on the last 2 deliveries, both of them dots. Not many deliveries left. Vijay needs to get the strike as soon as possible if they want to. And this time that's a good delivery, and Vijay finally takes the strike. A single taken.
Vijay off the mark on the very first delivery he faces. That's a good start by Vijay. But this is very well bowled by Ravi in this over. Another good delivery. A single taken though. And Vijay back on strike. The last delivery of Ravi's spell is bowled well. 3.5 overs, 27 without any wicket, and this is his last chance to take a wicket in this match. And he gives away a single. That's the end of the 16th over, and Ravi's quota of 4 overs. The score is 143 for the loss of 4 wickets. And Vijay back on strike. And we'll be back after a short commercial break. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट. मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है. अरे रे सो सैड. सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प. तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ. अब खेलने में मजा आएगा. सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए. पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के. इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है. कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें. Vimerson with his next over, and Vijay taking an easy single towards the covers. This is good bowling by Vimerson. Vijay giving him the due respect. Mukund back on strike. He will have to give strike to Vijay, or probably will try to accelerate himself. He's taken quite a few deliveries, 12 balls and just 6 runs. So a strike rate of just 50, which is not at all acceptable in any T20 game. That's a good shot this time. Will he be out? And that's just a single there. Got a thick outside edge, but didn't carry to the fielder. He was lucky there. Vimerson to Vijay this time. Oh, and this time he hits it big. Could be a catch as well, but no, he hits it brilliantly in the gap for a boundary. And the slowness of his deliveries giving Vijay a lot of time to hit it in the right area. That's a good shot. That is what Vijay is known for, hitting boundaries and sixes, and he started now. This is first boundary towards the deep square leg for 4 runs.
Oh, and that was wonderfully stopped by Vimerson. Almost took his hand, but look at the effort there. Could have been caught as well. And there's no emotion on his face. He's so powerfully built. Vimerson there. Stopping a ball hit with such a power from Vijay is not a joke. Oh, and just have a look. He was trying to catch that. Absolutely brilliant that by Vimerson. A true cricketer in every sense. And this time, that's a no ball. Poor delivery by Vimerson. Should have gone for that, and that's a free hit. And this time, Vijay has a license now. We'll see if he could cash on this free hit. And he's not out because there's no stumping on the free hit. He was trying to hit a big shot, but well bowled by Vimerson there. Vimerson with his next delivery, Vijay on strike. Oh, and this time he hits it really hard. Could be a boundary. It is a boundary. No chance for Harshad Patkar there. He tried his level best, but that was hit with immense power. That is what makes Vijay such a special player. Just have a look at that brilliant shot. And the bottom hand power behind that. Oh, and that is absolutely crashed. Went to the boundary like a trace of bullet. The score after 17 overs is 154 for the loss of 4 wickets. And we'll request our Hindi commentator now to join back into the commentary box and take you through till the end of this innings. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और विजय की ज़बरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। लय में आ चुके हैं वो। और अमित कोठा, इनके बारे में क्या ही कहा जाए। गेंदबाजी इन्होंने ज़बरदस्त की, लेकिन इतनी वाइड गेंदें डाल दी हैं कि तारीफ करने के बावजूद भी तारीफ करने का वहां पर कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं दिख रहा है तारीफ के काबिल गेंदबाजी की, लेकिन इतनी वाइड डाल दी हैं कि 3 ओवर में 30 रन। और राम माने को दिया इसलिए। जी हाँ, कभी कभी ये बदलाव इसलिए होते हैं। राम माने की गेंद पर बढ़िया शॉट। यहां पर मुकुंद भी अब आए हैं अपनी लय में। और 4 रन, जबरदस्त प्रहार डी पॉइंट के क्षेत्र में 4 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट था। आपको रिप्ले दिखाएंगे। ये देखिए, अच्छी गेंद थी राम माने की, खराब गेंद नहीं थी, लेकिन जगह बनाई, रूम बनाया, लेग स्टंप की दिशा में गए और पॉइंट के क्षेत्ररक्षक के पास से निकाला गेंद को। 4 रन और स्वीपर कवर की अच्छी कोशिश, लेकिन बहुत ही बढ़िया शॉट था। यहाँ मुकुंद 11 पर ही खेल रहे हैं 14 गेंदों पर, लेकिन ये जो शॉट लगाया उन्होंने, ये शायद सबसे बेहतरीन शॉटों में से एक है आज इस शाम के। राम माने की अगली गेंद, एक और बढ़िया शॉट, हवा में खेला हुआ शॉट, लेकिन आराम से मिड ऑफ पर 1 ही रन होगा यहाँ पर चूके क्षेत्ररक्षक, लेकिन कोई खास नुकसान नहीं हुआ, 1 ही रन। और अब विजय है स्ट्राइक पर। विजय की बल्लेबाजी का तो सारे खिलाड़ी इंतजार करते हैं। जी हाँ, इतने लंबे लंबे और बड़े बड़े छक्के लगाते हैं कि अच्छों को दिन में तारे दिखा दें। और ये खराब गेंदबाजी, और 4 रन के लिए गेंद जाना चाहिए, लेकिन 1 ही मिलेगा। क्षेत्ररक्षक तैनात है वहां पर। भाग्यशाली मान रहे होंगे राम माने अपने आप को। खराब गेंद थी लेग स्टंप की दिशा में और विजय उसको भुना नहीं पाए। और ये अच्छा प्रहार, लेकिन 1 ही रन लॉन्ग ऑफ की दिशा में।
और सही निर्णय भी, विजय अगर टिक गए तो बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। क्या जबरदस्त प्रहार है, क्या यहां पर एक छक्का होगा? बड़ा छक्का है ये। और यही कारण था कि ये सिंगल ही ले रहे थे पिछली गेंद पर। इन्हें पता है अपनी क्षमता और अपनी ताकत का, इन्हें अंदाजा भी है। आप देखिए क्या जबरदस्त प्रहार है यहां पर, वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में 6 रन, बड़ा छक्का। और विजय देखते ही देखते 18 पर आ गए, सिर्फ 10 गेंदें खेली उन्होंने। यही तो इस बल्लेबाज की खासियत है। और इस बार एक और बड़ा प्रहार, लेकिन क्या इस बार ये सीमा रेखा के पार पहुंचा पाएंगे? जी नहीं, 2 ही रन। हालांकि शॉट बहुत जबरदस्त था, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। 2 रन मिले और 18 ओवर के बाद स्कोर है 169 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। अनिल कोठा आए हैं अपना आखिरी ओवर लेकर, 30 रन दे चुके हैं और अच्छी खासी वाइड्स डाली इन्होंने आज। हालांकि 2 महत्वपूर्ण विकेट भी लिए हैं, तारीफ भी करनी होगी। बढ़िया शॉट मुकुंद का, आगे बढ़कर खेला मिड विकेट की दिशा में, 1 ही रन। ये बहुत ही दिलचस्प एक युद्ध होगा अमित का विजय के खिलाफ। और ये विजय ने पहले ही गेंद पर इस युद्ध को ऐसा लग रहा है खत्म कर दिया है। क्या बड़ा प्रहार है, जबरदस्त प्रहार, 6 रन। बहुत ही बड़ा छक्का, इस बार फिर से लग रहा है 6 रन होगा। ये बहुत बड़ा ये प्रहार है, लेकिन इस बार ये आउट हो गए हैं और अपना बदला ले लिया यहां पर अमित ने, अनिल ने, माफ कीजिएगा। बहुत बढ़िया ये गेंदबाजी, और विजय से बल्लेबाज को छकाना और चकमा देना कोई आसान काम नहीं। और यहां पर श्रेय पूरा जाता है अनिल कोठा को। जी हां, लालच दिया इस बार और विजय ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को गलत शॉट मारने की कोशिश की। कवर्स पे मारते तो शायद छक्का मिल जाता। बहुत बढ़िया कैच ये हर्षद पाटकर का, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। अनिल कोठा, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी कहनी पड़ेगी।
विजय को चकमा दिया, छकाया, उन्हें आमंत्रित किया बड़ा शॉट खेलने के लिए, एक छक्का भी खाया। और ये बढ़िया शॉट 4 रन के लिए नए बल्लेबाज राजेश नायडू का। आते ही चौका लगाया। और अभी भी वाइड डाल रहे हैं, बड़ा ही अचरज हो रहा है ये देख के। और इस बार हवा में एक बार फिर से खेला, क्या यहां पर कैच होंगे? जी नहीं, एक ही रन। अच्छी गेंदबाजी लेकिन पूरी तरह आमंत्रित कर रहे हैं। और ये ओवर की समाप्ति, 19 ओवर के बाद स्कोर 182 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अनिल के ये 4 ओवर समाप्त, 43 रन दिए उन्होंने, 3 विकेट लिए हालांकि। विजय सिंह को भी पेविलियन भेजा, उन 3 में से एक बल्लेबाज। विमर्शन आए अपना आखिरी ओवर लेकर, इस पारी का भी आखिरी ओवर। बढ़िया शुरुआत, लेकिन ये छोड़ दिया इन्होंने, चूक गए यहां पर, डॉट गेंद हो सकती थी। और मुकुंद दूसरे रन के लिए भी आते हुए, लेकिन एक ही मिलेगा। खराब फील्डिंग यहां पर विमर्शन के द्वारा अपनी गेंद पर। और ये अच्छा शॉट मुकुंद के द्वारा, इस बार गैप में खेला हुआ एक ही रन। डीप मिड विकेट के क्षेत्र रक्षक ने बढ़िया फील्डिंग की वहां पर। बढ़िया गेंदबाजी विमर्शन के द्वारा, और ये उनका एक और विकेट। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, मानना पड़ेगा। तीसरा विकेट इनका, ड्रीम स्पेल डाल रहे हैं। क्या स्टंपिंग कराई है, वाह। राजेश नायडू को ललचाया। जी हाँ, और अंत में लेग स्पिन डाल देते हैं। आते तो ऐसा है जैसे लगता है कि सीधे गेंद डालेंगे, लेकिन उंगलियों से घुमाव करते हैं जरूर। बहुत ही बढ़िया ये गेंदबाजी। और यहां तारीफ के हकदार विमर्शन, नादर, जबरदस्त गेंदबाजी। 3 विकेट ले चुके हैं सिर्फ 28 रन देके, 26 रन माफ करिएगा। और उनके 4 ओवरों में अब 3 गेंदें बची हैं, आखिरी ओवर उनका। और क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है। और एक छठा विकेट भी गिरता हुआ 184 के स्कोर पर। हालांकि रन बहुत बना लिए हैं जस्ट क्रिकेट ने, लेकिन विमर्शन की तारीफ करनी होगी।
एकमात्र अकेले गेंदबाज जिन्होंने विकेट भी लिए हैं और अभी तक रनों के अंबार को भी रोक के रखा है कुछ हद तक। सुनील पंजाबी आए हैं, कप्तान इस टीम के। टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और बहुत ही बढ़िया फैसला, वो खुश होंगे अपने फैसले से। और क्या गेंदबाजी है, वाह, जबरदस्त गेंदबाजी, लालच दे के चकमा दे रहे हैं, वाह। सुनील पंजाबी ने यहां पर कोशिश की ऑफ स्टंप की तरफ शफल करने की, लेकिन विमर्शन बहुत ही चतुर गेंदबाज, और इसे कहते हैं एक बढ़िया क्रिकेटिंग ब्रेन होना कंधों के ऊपर। बहुत ही जबरदस्त ये गेंदबाजी। और सुनील पंजाबी ये भी कम अनुभवी खिलाड़ी नहीं है, करारे प्रहार लगाते हैं, बड़े शॉट्स खेलने में माहिर। छोटी गेंद और उसको सही से व्यवहार दिया 4 रन के लिए। मैं इन्हीं की तारीफ इसलिए कर रहा था। ये देखिए, छोटी गेंद, खराब गेंद को उन्होंने तुरंत बाउंड्री के पार पहुंचाया, सीमा रेखा के पार। जिस तरह के व्यवहार की उम्मीद थी इनसे, वैसा ही देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं खराब गेंद जैसे ही आई, क्योंकि पिछली गेंद डॉट भी गई थी तो उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव भी था कि इस गेंद पर कुछ अच्छा करना है, और तुरंत उन्होंने एक बढ़िया खिलाड़ी और कप्तान तो ही वो इस टीम के आज, रिस्पॉन्ड किया प्रेशर में। एक बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है। आखिरी गेंद और इस बार बच गए, बोल्ड होते होते बच गए। और क्या यहां पर तीसरे रन के लिए आना चाहेंगे? जी हां, आ रहे हैं मुकुंद जालान, और 3 रन भी पूरे कर लिए, वाह, तारीफ करनी होगी। यहां पर वाइड गेंद भी है, ये 4 रन मिल गए। और ये खराब गेंदबाजी, 4 रन दे दिए यहां पर त्योहार स्वरूप, उपहार स्वरूप, जैसे त्योहारों में उपहार देते हैं। महंगे पड़ सकते हैं 4 रन, आपको लक्ष्य का पीछा करना है। 192 रन स्कोर हो गया है, और विमर्शन से ऐसी उम्मीद नहीं है इस तरह की गेंदबाजी की। 34 रन हो गया है उनका 3.5 ओवरों में जो दिए हैं उन्होंने। 3 महत्वपूर्ण विकेट, लेकिन इकोनॉमी फिर आगे बढ़ती हुई। 8 के ऊपर का हो गया है इकोनॉमी रेट। अच्छी गेंद यहां पर, और रन आउट की कोशिश यहां पर। क्या यहां पर रन आउट करना चाहेंगे? जी नहीं, एक ही रन लिया और ओवर की समाप्ति। 20 ओवर के बाद स्कोर है 193 रन, और एक बहुत बड़ा लक्ष्य दिया है, 194 का लक्ष्य दिया है जस्ट क्रिकेट ने एवेंजर्स को। और विमर्शन नादर 35 पर 3 4 ओवर में, देखिए, और 3 विकेट लिए। अनिल कोठा ने भी 43 रन पर 3 विकेट। रवि चौहान ने जबरदस्त गेंदबाजी कराई, 28 रन, हालांकि इनमें विकेट नहीं मिला। विशाल शेठ 62 46 पर, विजय सिंह 26 13 पर। और आप देख सकते हैं यहां पर 23 रन की बढ़िया पारी पूरव द्वारा भी, और मुकुंद जालान ने भी अंत में 16 रन की अच्छी पारी खेली। हालांकि 20 गेंदें ली उन्होंने, लेकिन दूसरे छोर पर विजय जैसे बल्लेबाज से तो खतरा लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। और आप देख सकते हैं गौरंग जावले बहुत ज़्यादा महंगे, 2 ओवर 26। हर्षद पाटकर भी अच्छे खासे महंगे साबित हुए। विमर्शन और रवि चौहान ने ही सिर्फ कम रन दिए हैं, बाकी सारे गेंदबाज अच्छे खासे रन दे चुके हैं। और 194 रन का लक्ष्य दिया है 20 ओवरों में, बहुत ही बड़ा ये लक्ष्य है। और थोड़ी देर में आपके साथ वापस जुड़ेंगे दूसरी पारी को लेकर, तब तक बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। जस्ट क्रिकेट ने 193 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में। एवेंजर्स के लिए 194 का लक्ष्य। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे, सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ, अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे, सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ, अब खेलने में मजा आएगा।
सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा।
सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। We welcome you back.
to the second innings in the PAYTM First Games, the Super League match between Just Cricket and the Avengers. And the Avengers being given a target of 194 to chase. That's a steep target. They'll have to go all out and unleash themselves from the word go if they want to achieve this score. Not an easy target to chase. And Just Cricket has played brilliantly in the first innings. Contributions by many batsmen. And the first delivery being bowled. Gurvineet Singh bowling to Ravi Chavan, who's the opening batsman along with Kiran Chete. That's a good start. Dot delivery to start the over. Gurvineet with his next delivery. That's a good shot by Ravi. Straight to the fielder. Well fielded by Purav at mid off. That's a good delivery by Gurvineet. He's picked the right length. The lanky pace bowler there. Tall, and he has a very good action as well. An open chested action. Helps him swing the ball away from the right handers. And they've placed a slip also for the opening batsman, Ravi Chavan. That's a good delivery and well played by Ravi, and straight to the fielder again. The covers not allowing any single again. So 4 dot deliveries to start. A wonderful start by Gurvineet Singh. And this time a wonderful delivery again. A dot delivery. A wonderful start to the over by Gurvineet. This time it was a wide. That was a good delivery, but then outside the off stump, too wide. Oh, and what a delivery that is. A peach. Great comeback, and look at the length he's bowling. Absolutely impeccable. And a very good carry to the keeper as well. So he is putting that extra effort which is required. A wonderful start by the opening bowler there. And this time a full toss, and Ravi hits a good shot towards the sweeper cover. Good stop there, just a single. This is the end of the first over and just 2 on the board. A wonderful start by Gurvineet. Ravi off the mark. He's played 6 deliveries, but he needs to stay there. He's a very good batsman, and if he stays there for long, this match could get interesting.
Rajesh Naidu coming to bowl the second over. He's taken 2 slips. Wonderful captaincy that, and good thinking by the bowler as well. They're attacking from the word go. Good first delivery. Ravi on strike. Oh, and again a good delivery. This time the keeper misses it. Could go to the boundary. They're chasing it. Probably they'll stay back for a single only. That's a bye signal by the umpire. So this is good bowling by Rajesh Naidu. And Kiran Shetty is on strike now. His first delivery. He's taking his guard. Good shot played towards the point. Point does well. No run taken again, so another dot. So both these bowlers doing a wonderful job. A single this time. Kiran off the mark. Ravi back on strike. Oh, another good delivery this time by Rajesh Naidu. Bowling, really good bowling. Basics, very clear from both these bowlers. Absolutely wicket to wicket bowling, and they're utilizing the swing as well. Oh, and wonderful delivery this time by Rajesh. What a start to his spell. A good over by him, just 2 runs given, and the score is 2 overs and 4 runs without any loss. So what a start by the Just Cricket bowlers, the opening bowlers, doing really well. Kulvini starting with another good over. Starts off with a good delivery, a dot again. Another dot delivery. They take a single, I beg your pardon there. Take a quick single.
Another good delivery. What a shot! That is a huge six. Wow. That is some statement made by the batsman. Ravi Chauhan there. Brilliant batting that is. A huge six. And the long off fielder just a spectator. That's a good comeback. A dot delivery, but what a shot that was. The first boundary scored, and just like the Just Cricket team had started their campaign of boundaries with a six towards a deep square leg, the Avengers also starting with a six. And what a delivery that was! Is that out? And yes, he's taken that on an edge. Absolutely brilliant bowling that by Gurvineet, and the batsman doesn't seem to be happy there. That's an absolutely peach of a delivery. And the first wicket gone for Avengers. The score is 11 for the loss of 1 wicket. And Gurvineet takes his revenge. 3 overs, 11 runs. Let's have a look at that wonderful delivery. Absolutely brilliant bowling this is. Oh, and it seems it took the edge there, and the umpire raising his finger. So the first wicket taken by Gurvineet, and he gives the breakthrough to his team Avengers. I beg your pardon, Just Cricket. And Avengers losing the first wicket on the score of 11 at the end of the third over. We'll be back after a short commercial break. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट. मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है. अरे रे सो सैड. सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प. तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ. अब खेलने में मजा आएगा. सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए. पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के. इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है. कृपया जिम्मेदारी The new batsman Hiren Chande. Rajesh Naidu comes into bowl his next over. What a shot. First up there by Hiren. And that's a poor bit of fielding there. A boundary scored. On the first delivery, Hiren has announced his arrival with the bang there. Brilliant cut shot there. That was Kiran, I beg your pardon. What a shot that was by Kiran. He cuts it brilliantly. Would like to apologize. That was not Hiren, that was Kiran. Brilliant shot by Kiran. Hiren is on the non-strikers end, but what a shot that was. 2 wonderful shots we have seen. One by Ravi, which went for a huge six, and then Kiran coming into the act, his first boundary. Rajesh with his next delivery. Another good delivery and straight to the point fielder, but he misses that. A single there, given easily. Hiren Chande on strike now. He'll be facing his first delivery.
Oh, and this time he plays it in the air. The point fielder makes a good attempt, but a single taken towards the third man. So he's off the mark. Kiran Chande, his first delivery. Rajesh bowling a good length there and a wonderful line as well. Wonderful bowling that is. Brought the ball back into the batsman. Another good delivery by Rajesh. Wicket to wicket bowling. This is really good bowling by Rajesh Naidu. Coming back nicely after being hit for a boundary on the first delivery. Kiran on strike. That's a wonderful channel again by Rajesh Naidu. Allowed it to go. Kiran there. That's the end of a very good over. Even after being hit for a boundary on the first delivery, he's come back nicely. 17 for 1 after 4 overs. 177 needed of 96 deliveries. That's a very steep ask. 11 runs per over. Not an easy task for the Avengers. They'll have to start hitting boundaries in almost every over, as this could be a one-sided affair. Gurvineet bowling his third one. Look at the swing he's getting. The amount of swing he's getting is absolutely brilliant to watch, and he has a very open chested action and a very smooth run up as well. So a lot of qualities this bowler has, and a wonderful option for any captain if he bowls the new ball. Brilliant swing bowling that is, and the right hander batsman could be in trouble whenever so much swing is there. This time it's a short delivery, but they've placed the fielder for the placement there. No run. Again a dot delivery. Wonderful bowling by Gurvineet. Oh, and this time it seems it will be a wide, and yes, it is a wide, signaled by the umpire. That's a peach of a delivery, another swinging delivery, and he misses it completely. The batsman there. Wonderful bowling by Gurvineet.
That's the end of a very good over. 5 overs, 18 runs, and we'll be back after a short commercial break. Stay tuned, viewers. से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। Sunil Punjabi coming into ball. The captain there. He started off well. Oh, and another good delivery. So brilliant bowling that by Sunil. 3 dot deliveries to start. What a wonderful start that is. Another good delivery. What a peach that was. Luring him into the flight there. So that's a wonderful start to his spell. Sunil Punjabi, the first over he's bowling in 5 dot deliveries. Wow. A dream start for any bowler in a T20 match. But Avengers will have to start scoring. They will have to at least rotate the strike. They can't just keep on playing. And another poor shot played there. The intent not really visible for rotating the strike. Just a single to end the over. Just 1 run. That's a wonderful bit of bowling in 6 overs. 19 runs is the score. A huge total in ask to be chased, and that's a poor start by all means. Just 84 deliveries left and 175 runs need to be scored at 12.5 runs per over. And we'll now request our Hindi commentator to join in and entertain you all with his Hindi commentary. We welcome you back, Shaleen, in this innings again for your Hindi commentary. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही हल्की शुरुआत की है। राजेश नायडू आए हैं अपना तीसरा ओवर लेकर और सुनील पंजाबी के पहले ओवर में सिर्फ 1 ही रन लिया। ऐसे तो इस लक्ष्य का पीछा नहीं हो पाएगा। आपको बड़े शॉट्स खेलने ही होंगे। 9 विकेट बचे हैं और 6 ओवर हो चुके हैं। तो अब समय आ गया है कि आप हाथ खोलें और कुछ हवाई फायर करें अपने बल्ले से। 19 रन है सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंदबाजी जस्ट क्रिकेट के गेंदबाजों द्वारा बांध के रख दिया है। बहुत मुश्किल हो रहा है। बढ़िया गेंदबाजी। आप देखिए कितनी बढ़िया ये लाइन रख रहे हैं। दिशा इतनी ज़बरदस्त है और तारीफ करनी होगी यहाँ पर राजेश नायडू और गुरविनीत सिंह की। और अब सुनील पंजाबी ने भी 1 ओवर डाल दिया है सिर्फ 1 रन देकर। कप्तानी की भी यहाँ तारीफ करनी होगी। सुनील पंजाबी कप्तान हैं, बहुत बढ़िया उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला था और बहुत ही ज़बरदस्त फैसला था। और 193 का बड़ा विशाल लक्ष्य
खड़ा किया और उसके बाद गेंदबाजी तो इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि लग ही नहीं रहा है कि एक बड़ा लक्ष्य का पीछा हो रहा है। बहुत ही हल्की शुरुआत यहाँ पर। 7वां ओवर चल रहा है, 2 गेंदें हो चुकी हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी है और 1 रन दे दिया यहाँ पर। क्या यहाँ पर बल्ला लगा है या बाय होगा, देखना है। जी हाँ, बाय का इशारा। बल्ले से गेंद छू ही नहीं रही है, इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक और अच्छी गेंद इस बार और 1 रन के लिए आना चाहेंगे, हालांकि सीधे फील्डर के हाथ में गेंद। रविंद्र वहाँ पर, रविंद्र झुंझुनवाला सबसे अनुभवी खिलाड़ी इस टीम के। अमूमन वही कप्तानी ही करते हैं इस टीम में, लेकिन आज शायद दूसरे अनुभवी खिलाड़ी को यहाँ पर उन्होंने मौका दिया है। बढ़िया गेंदबाजी है, एक बार फिर से डॉट गेंद। क्या बॉलिंग हो रही है, वाह। और ये ओवर की समाप्ति। जी नहीं, 1 गेंद बची है। अच्छी गेंदबाजी, एक बार फिर से डॉट गेंद और इस ओवर में भी सिर्फ एक बाई का अतिरिक्त रन आया, यानी कि मेडन ओवर है ये। जबरदस्त यहां पर गेंदबाजी हुई है। 7 ओवरों में 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और ये बहुत ही लचर शुरुआत है बल्लेबाजों के द्वारा। 194 का पीछा करते करते आप 7 ओवर में 20 रन तो नहीं बना सकते। गेंदबाजी अच्छी है, हालांकि तारीफ करनी होगी, लेकिन रन तो फिर भी आपको बनाने के लिए शॉट्स खेलने होंगे, कुछ नया करना होगा। अगर आप क्रीज में ही खड़े रहेंगे तो रन कब बनेंगे। बहुत ज़्यादा रनों की आवश्यकता। भाई ये लगा देना एक मोटी। और गुरविनीत का आखिरी ओवर, ये बढ़िया कप्तानी कहूंगा मैं इसे सुनील पंजाबी की। देख सकते हैं 3 ओवर 10 रन, सिर्फ 10 रन दिए हैं सिर्फ, और 1 विकेट भी लिया है। और क्या ज़बरदस्त स्विंग बॉलिंग कराई है गुरविनीत ने आज। तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की। बहुत ज़्यादा हम गेंदबाजों की बात नहीं कर पाते हैं T20 क्रिकेट में, लेकिन ऐसे गेंदबाज बढ़िया शुरुआत, डॉट गेंद। बढ़िया गेंदबाजी और इस बार यहां पर विकेट कीपर से चूक हो गई है और ये शायद वाइड भी होगी, लेकिन 4 रन यहां पर वाइड के, 5 रन मिल गए। आपको रिप्ले दिखाएंगे। यहां पर विशाल शेठ से चूक हुई, स्विंग करती हुई गेंद। और ये 5 रन। और ये बढ़िया गेंदबाजी और बढ़िया शॉट भी साथ में। और इस बार 1 रन के लिए तेजी से आते हुए क्या ये रन आउट हो जाएंगे, लेकिन वहां पर चूक हो गई एक बार फिर से। और ऐसे मौके आपको बुनाने होंगे। कितनी बढ़िया तरीके से उसे रोका था, जबरदस्त क्षेत्र रक्षण।
का नज़ारा दिखाया था मिड विकेट के क्षेत्र रक्षक ने। बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी है। जी हाँ, बिल्कुल सही जगह पर रख रहे हैं और वहीं से स्विंग करा रहे हैं। बहुत मुश्किल है। बल्लेबाजों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इम्तिहान हो रहा है। इस बार छोटी गेंद और थर्ड मैन की दिशा में खेला, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पे एक रन नहीं ले पाए। और ये बहुत बढ़िया गेंदबाजी, एक बार फिर से 4 गेंदों पर सिर्फ इन्होंने बल्ले से 2 ही रन दिए हैं अभी तक। हालांकि एक चौका गया था वाइड पर, 1 ही रन दिया है बल्ले से। 5 रन वाइड के चले गए। अगर वो ना होता तो बहुत ही ज़बरदस्त ये ओवर था। और एक करारा प्रहार यहाँ पर, क्या यहाँ पर एक चौका होगा? जी नहीं, 1 ही रन। लॉन्ग ऑफ पर एक क्षेत्र रक्षक तैनात है। बहुत देर बाद कोई अच्छा शॉट देखने को मिला है। बढ़िया बल्लेबाजी नहीं हो रही है। रनों की गति को तेज करना होगा। सिर्फ 27 रन, 8 ओवर होने वाले हैं। जी हाँ, लगता है मैच अभी से ही जस्ट क्रिकेट की झोली में झुकता जा रहा है। इस बार बढ़िया शॉट, लेकिन एक बार फिर से 1 ही रन होगा लॉन्ग ऑफ की दिशा में। और ये ओवर की समाप्ति। 8 ओवर के बाद 28 रन स्कोर है एवेंजर्स का। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। सुनील पंजाबी अपने दूसरे ओवर को लेकर आते हुए। बढ़िया शुरुआत हो रही है। तेज रन लेने की कोशिश, यहां पर रन आउट हो सकते हैं। और ये यहां पर बहुत ही लचर प्रदर्शन यहां पर कप्तान सुनील का। इससे आसान विकेट तो शायद ही उन्हें मिलता आउट करने के लिए। जी हाँ, विशाल ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से एक ही टप्पे में हाथ में गेंद पहुंचाई और इन्होंने चूक कर दी वहां पर। सुनील की अगली गेंद, एक और डॉट गेंद। जी हाँ, अगर आप देखेंगे तो 30-40 गेंदे डॉट खेल चुके हैं पहले 9 ओवरों में। बहुत खराब बल्लेबाजी है। और इस बार ये वाइड गेंद और 1 रन की कोशिश यहां पर, लेकिन वापस भेज दिया। हिरेन चांदे 13 गेंदों पर 2 रन। किरण शेटे 24 पर 10 रन। बहुत ही ज़्यादा ये खराब बल्लेबाजी कहूँगा मैं इसे। 9वां ओवर भी समाप्त होने ही वाला है।
और एक स्लिप ले ली है और ये स्टंपिंग, जबरदस्त गेंदबाजी सुनील की, वाह, तारीफ करनी होगी यहां पर। देखना पड़ेगा कि बोल्ड हुए हैं, क्लीन बोल्ड या स्टंपिंग है। जी हाँ, ये स्टंपिंग है, स्टंप आउट हुए हैं। और ये दूसरा विकेट आउट होता हुआ, खराब बल्लेबाजी है और बहुत ही अच्छी यहां पर सूझबूझ भरी गेंदबाजी, फ्लाइट दी गेंद में। अब 30 पर 2, 9वां ओवर चल रहा है, एक ही गेंद बची है और एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ, अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। हर्षद पाटकर आए नए बल्लेबाज, सुनील पंजाबी का पहला विकेट ये और एवेंजर्स का दूसरा विकेट गिरता हुआ। क्या जबरदस्त गेंदबाजी थी और उतनी अच्छी विकेट कीपिंग। हर्षद की पहली गेंद और ये पहली गेंद पर उन्हें चलता किया, बोल्ड मार दिया है। क्या गेंदबाजी है सुनील पंजाबी की, तारीफ करनी होगी। तीसरा विकेट भी गिरता हुआ। अरे पंजाबी ऑफ स्टंप यहां पर 30 पर 3, 9 ओवरों के बाद। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ। खस्ता हालत में एवेंजर्स की टीम, 30 पर 3। सुनील पंजाबी ने अपने दूसरे ओवर में 2 विकेट लिए हैं और 2 ही रन दिए 2 ओवरों में। क्या जबरदस्त गेंदबाजी है कप्तान के द्वारा, तारीफ करनी होगी सुनील पंजाबी की। कप्तानी की उन्होंने आज, और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं, एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस जुड़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ, अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और राम माने आए हैं नए बल्लेबाज, लेकिन वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर होंगे। किरण शेते हैं स्ट्राइक पर, 2 स्लिप ली है, फर्स्ट स्लिप भी ले ली है। विजय सिंह फर्स्ट स्लिप पर और दूसरे स्लिप पर हैं चेतन कपूर। ये बढ़िया शुरुआत यहां पर। मनीष सोलंकी बाएं हथा गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी करने। और इस बार क्या ये स्टंप आउट हो गए हैं। तीसरे अंपायर के लिए मांग हुई है और बढ़िया यहां पर विकेट कीपिंग कर रहे हैं विशाल शेठ, तारीफ करनी होगी।
और ये देखिए, यहां पर मुझे लगता है तीसरे अंपायर को जरा सी भी हिचक नहीं होगी आउट देने में। जी हाँ, और आउट का निर्णय दिया है तीसरे अंपायर ने, और सही निर्णय, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी, बहुत ही ज्यादा बाहर, और चौथा विकेट भी गिरता हुआ, और विकेटों का अंबार लग चुका है यहां पर। बहुत ही जल्दी 3 विकेट गिर गए हैं, कुछ ही गेंदों के अंतराल में 3 विकेट गिर गए। सुनील पंजाबी के पिछले ओवर में 2 और अभी 1 ले लिया है मनीष ने यहां पर। अनिल कोठा है नए बल्लेबाज। मनीष की अगली गेंद, 4 विकेट गिर चुके हैं, और ये पहली गेंद पर यहां पर अपील कर रहे हैं, क्या ये एलबीडब्ल्यू होंगे यहां पर, और शायद ऊंचाई ज्यादा थी, शायद अंपायर ने इसलिए मना किया है। और ये रिव्यू लिया है गेंदबाजी करने वाली टीम ने।
और ये बहुत ही ऊपर था, पैड के ऊपरी हिस्से में लगा और अंपायर का सही निर्णय। हालांकि तीसरे अंपायर से रिव्यू के लिए मांग की गई थी, लेकिन उनका भी निर्णय ऑन फील्ड अंपायर के साथ ही और नॉट आउट का इशारा। अगली गेंद लेकर आते हुए मनीष, और ये बढ़िया गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी इस बार। ये स्टंपिंग की अपील कर रहे हैं, और क्या इस बार तीसरे अंपायर की मांग की है? ऐसा लग रहा है कि नहीं। बहुत बढ़िया ये गेंदबाजी और विकेट कीपिंग का नज़ारा देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर से फ्लाइट कराई गेंद और 1 रन के लिए खेल दिया इसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 ही रन। बहुत बढ़िया गेंदबाजी है मनीष के द्वारा, तारीफ करनी होगी उनकी। एक और ज़बरदस्त गेंद, राम माने ने उसे अच्छी तरीके से खेला, लेकिन मनीष की तारीफ करनी होगी। जी हाँ, ज़बरदस्त ये इनकी लाइनअप है गेंदबाजी की। और मनीष बाएं हत्था गेंदबाज, क्या ज़बरदस्त फ्लाइट करा रहे हैं। उधर से सुनील पंजाबी फ्लैटिश ट्रैजेक्टरी रख रहे हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह की उम्दा गेंदबाजी खेलना, और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। दस ओवरों के बाद 31 रन स्कोर है, और बहुत ही हल्का मैच हो रहा है। ये मैच अब औपचारिकता ही रह गई ऐसा लग रहा है। 10 ओवरों में चाहिए इन्हें 163 रन जीतने के लिए, जो कि 16.3 का रन रेट प्रति ओवर का है। और अभी हम नामुमकिन सा लग रहा है, 4 विकेट पहले ही गिर चुके हैं। विकेट बचाने के लिए खेल रहे हैं, ना कि रन बनाने के लिए। देखिए लेग स्लिप भी ले लिए, कितनी अटैकिंग फील्ड है ये, आक्रामक क्षेत्ररक्षण यहाँ पर कप्तान का। जी हाँ, सुनील पंजाबी और रविंद्र झुंझुनवाला दोनों ही बहुत ही सीनियर खिलाड़ी इस दल के। अगली गेंद लेकर आते हुए सुनील, इस ओवर की पहली, और ये जबरदस्त गेंदबाजी, बच गए यहां पर। और इस बार ये बच गए। क्या ये चौका जाएगा? बढ़िया यहां पर पीछा कर रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया यहां पर क्षेत्ररक्षण। लेग बाय का इशारा, 2 रन। सुनील की अगली गेंद बढ़िया, यहां पर गेंदबाजी 1 रन ही होगा मिड विकेट के क्षेत्र में। अगली गेंद, और एक बार फिर से तेज रन भागने की कोशिश, लेकिन इस बार विशाल ने जबरदस्त विकेट कीपिंग दिखाते हुए रोक दिया। एक भी रन नहीं। जी हाँ, ये रन बनाने के यहां पर प्रयास भी नहीं कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। राम माने, किरण शेते अच्छा खासा समय टिक चुके हैं। किरण शेते खास करके 11वां ओवर चल रहा है। और एक और डॉट गेंद। जी हाँ, ये मैच
एक तरह से औपचारिकता ही है, ऐसा लग रहा है। जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है, इंटेंट नहीं दिख रहा है। और ये जैसे हमने बात की इंटेंट ना दिखने की, बड़ा शॉट, और ये 4 रन, बढ़िया शॉट। ये इस तरह के शॉट्स की जरूरत है। 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आप डॉट बॉल तो खेल ही नहीं सकते हैं। हालांकि इस बार राम माने ने दिखाया कि उन्हें भी ये चीज समझ में आ गई है कि अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से ही काम चलेगा। ये ओवर की समाप्ति, 11 ओवर के बाद स्कोर है 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अनिल है स्ट्राइक पर, और ये बढ़िया शॉट इस बार 4 रन के लिए। जबरदस्त प्रहार, कवर्स के क्षेत्र में खेला, बढ़िया शॉट डीप कवर पे, 4 रन। अनिल का ये बहुत ही अच्छा शॉट अनिल कोठा द्वारा। मनीष सोलंकी अपना दूसरा ओवर लेकर आते हुए, बढ़िया फ्लाइट इस बार, और क्या रोका है, तारीफ करनी होगी। अच्छा खासा तेज प्रहार था और बीच में हाथ लगाया उन्होंने, और शायद उन्हें चोट भी लगी है थोड़ी। जी हाँ, चोट खाए हैं वो। कैच लेने की कोशिश की और चोट लग गई अच्छी खासी। हालांकि बहुत तारीफ करनी होगी स्प्रे की, वहाँ पर मांग की है ऑन फील्ड अंपायर ने। और क्या यहाँ पर ये आगे गेंद डाल पाएंगे? ज़रूरत नहीं थी। हालांकि आपके पास रन इतने हैं कि आप इस तरह के खतरे मोल लेने की खास ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्रिकेटर की खास बात एक होती है कि वो आगे की नहीं सोचता है, वो उसी क्षण की सोचता है। एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर की निशानी होती है। और तुरंत ही स्प्रे का इंतजाम किया गया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और ये वाइड गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का। मनीष वापस गेंदबाजी करते हुए, क्या फ्लाइट देते हैं, वाह, तारीफ करनी होगी। और मज़ा आता है ऐसी फ्लाइट देख के। स्पिनर की खास बात है, स्पिनर अगर फ्लाइट के साथ ना हो तो एक सैनिक बिना अपनी तलवार के साथ लगता है। स्पिनर का हथियार ही उनकी फ्लाइट होती है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, और बच गए इस बार। पूछ रहे हैं क्या बल्ला लगा था अंपायर से।
अगली गेंद मनीष की। एक और डॉट गेंद। बारह ओवर 43 रन। 4 विकेट गिर चुके हैं, 8 ओवर बचे हैं। 150 से भी ज़्यादा रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। मैच जीतना तो अब खैर सर आवाज नाही येत सर एकाने बोला दोघांनी नका बोलू सर बॉलर प्लेइंग प्लीज नाही येत आवाज सर बॉलर कौन है यार और ये यहाँ पर विकेट कीपर से चूक हुई और 4 रन। 22 का 4 रन। पूरा वहाँ है गेंदबाजी करने, अच्छी शुरुआत, लेकिन यहाँ पर विकेट कीपर से चूक हुई। और ये जबरदस्त प्रहार इस बार और 6 रन। आखिरकार एक बड़ा शॉट खेलने में कामयाब अनिल कोठा। जबरदस्त शॉट, छोटी गेंद पूरब की और उचित व्यवहार किया उसके साथ। लॉन्ग ऑन से थोड़ी ही दूरी पर 6 रन। जबरदस्त शॉट। पूरब की अगली गेंद, एक और बड़ा शॉट, क्या इस बार भी 6 होगा? जी नहीं, इस बार 4 रन मिलेंगे, लेकिन जबरदस्त बल्लेबाजी है। तारीफ करनी होगी बल्लेबाज की। रिप्ले देखिए, बड़ा शॉट यहां पर बैकफुट पर आए और 4 रन के लिए इसे लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया। बहुत ही जबरदस्त ये ओवर गया है, हालांकि इसकी जरूरत बहुत पहले थी। भी तो बहुत देर हो चुकी है ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर अभी भी ऐसा खेलते रहेंगे तो शायद लक्ष्य के करीब पहुंच जाएं। 14 रन बन चुके हैं इस ओवर में, 3 ही गेंदें हुई हैं। एक और बढ़िया शॉट इस बार बैकफुट पे खेला हुआ, लेकिन एक ही रन होगा इस बार। 2 फील्डर लिए हुए हैं डीप में ऑन साइड की तरफ, लॉन्ग ऑन के अलावा भी। एक ही रन और राम माने स्ट्राइक पर। अनिल कोठा की तारीफ करनी होगी। और ये 2 रन एक बार फिर से डीप मिड विकेट क्षेत्र में खेला हुआ बढ़िया शॉट।
एक और अच्छा प्रहार, इस बार 4 रन फिर से हो गए। जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर, राम माने के बल्ले से निकला हुआ है बेहतरीन शॉट, सीधे खेल दिया उन्होंने 4 रन के लिए। क्या जबरदस्त प्रहार है, आप रिप्ले देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया शॉट, और खराब ओवर ये पूरव का। जी हां, बहुत रन बन गए इस ओवर में। इक्कीस रन बने पूरब के ओवर में, और 13 ओवरों के बाद हो गया स्कोर 65 रन। और विशाल पाटिल आए हैं नए गेंदबाज, अच्छे गेंदबाज हैं विशाल पाटिल। जबरदस्त गेंदबाजी विशाल की, बढ़िया शुरुआत, डॉट गेंद। विशाल की अगली गेंद, और यहां पर एलबीडब्ल्यू की अपील, क्या ये आउट होंगे? अंपायर ने यहां पर नॉट आउट दिया है, और अब रिव्यू भी शायद नहीं है इनके पास। और ये करारा प्रहार यहां पर, हालांकि एक ही रन होगा लॉन्ग ऑफ की दिशा में। बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है अब, लेकिन ये बहुत देरी से शुरू की इन्होंने, पहले शुरू कर देनी चाहिए थी ऐसी बल्लेबाजी। और ये जबरदस्त शॉट, क्या यहां पर ये बड़ा छक्का है? जी हां, 6 रन है। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां पर राम माने, ये देखिए क्या शॉट मारा है, लॉन्ग ऑन से दूर खेला हुआ शॉट। जबरदस्त प्रहार यहां पर बल्ले का पूरा चेहरा दिखाते हुए, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। 6 रन के लिए शॉट खेल दिया, और विशाल पाटिल स्तब्ध रह गए होंगे इस तरह का शॉट अपनी गेंद पर खेले जाते हुए देखने के बाद। अच्छे गेंदबाज हैं बहुत, और क्या वापसी की है, वाह, तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की, डॉट गेंद से वापसी। एक और बढ़िया गेंद, डॉट गेंद, बढ़िया गेंदबाजी विशाल की, अच्छी वापसी।
सुनील पंजाबी आए हैं अपना आखिरी ओवर लेकर और 74 पर 4 है 14 ओवरों के बाद स्कोर। आखिरी 6 ओवर्स बचे हैं और हम अनुरोध करेंगे अपने साथी कमेंटेटर से कि वो अंग्रेजी में कमेंट्री करें और आपका मनोरंजन करें। और ऐसा लग रहा है कि मनीष को गेंद दी है वापस। मनीष सोलंकी बाएं हाथा गेंदबाज, ज़बरदस्त गेंदबाजी की इन्होंने भी। और अब हम अपने अंग्रेजी कमेंटेटर से अनुरोध करते हैं कि वो आपको अंग्रेजी में कमेंट्री सुनाकर आप सभी का मनोरंजन करें। Another good delivery, a dot this time. That was a wonderful shot on the last delivery for a boundary by Anil. Kotha. Anil playing a wonderful innings. Cut nicely by Anil Kotha again. Could be another boundary, but no, there's a fielder there. Sweeper covered as well, just a single. This time it seems he's trapped in the flight, and yes, but that is drop short of the fielder, just a single. That was wonderful piece of bowling by Manish and could have been a catch as well. He was trapped in the flight. A single there towards the long off. This is wonderful bowling by Manish. He's enticing the batsmen and luring them to hit big shots. That is the way to play. And bowl spin bowling. What a wonderful piece of bowling that is. Another miscue hit. No run taken, a dot delivery. And that's the end of a wonderful over by Manish. The score is 81 after 15 overs. Last 5 overs left and 113 runs are required to win this match. Vishal Patil. Short delivery, pulled nicely, but there's a fielder there, wide of long on, just a single.
And this time he tries to hit it big, but manages a thick edge for a boundary. So runs coming thick and fast now for the Avengers, but seems it's too late in the day for them. Oh, and this time a short delivery pulled towards the mid wicket. Could be a boundary, but no, just a single there. Fielder is there specifically for that shot. Anil Kotha back on strike. Good shot played towards the long on, just a single again. Vishal with his next delivery, Rahman on a strike. Oh, and this time he plays it brilliantly towards the deep mid wicket for a huge six. What a shot! Probably the shot of the evening today. What a shot that is by Ram Mane. Excellent touch this guy is in. Just have a look at that pickup. Absolutely brilliant. Flick of the wrist, and what a shot that is. That's the shot of a man in form. Just have a look at that. Oh, and that's a brilliant camera work as well. Brilliant batting that by Ram Mane. This is a 16th over, 94 on the board. Ram Mane playing brilliantly. Ram Mane 16 balls, 29 runs. Anil Kotha 23 balls, 29 runs. Brilliant batting by both these middle order batsmen, and it seems they steered the ship, which was about to get drowned at a point of time. This time a good delivery by Vishal. And that's the end of the 16th over. The score is 94 for the loss of 4 wickets. And last 4 overs left in this match. 100 runs required in the last 4 overs. That will be a heck of a task, almost an impossible task. I haven't seen 100 runs being scored in 4 overs at any level. We'll have to keep hitting sixes if you want to do that. Sunil Punjabi coming in with his last over. The captain himself taking the onus on his shoulders for bowling. 17th over about to start. Sunil Punjabi. On strike is Anil Kotha. He's been brilliant, especially in the last few overs when he started hitting aerial shots. Good shot this time towards the deep mid wicket. Could be a boundary, but that's a good stop by the fielder there. Just a single. Wonderful throw from the deep as well. This is a wonderful shot. This time a boundary. What a shot that is. Extreme power shown by Ram Mane there. He's been absolutely brilliant. Just have a look at that. Slightly flattish trajectory. Pitched up and he hits it really well. Wide of the long on fielder.
There was another fielder between the long and the mid wicket as well, but he also couldn't do much. That was the quality and power behind that shot. Sunil with his next delivery. And this time he tries to hit it. The covers miscues it. But still, it seems it will go near the boundary. A couple taken there. Again by Ram Mane. Wonderful batting that is. That was a miss it. Still it went almost to the boundary. That's the kind of touch he is in. Ram Mane right now. Sunil Punjabi has bowled absolutely brilliantly. But this over till now has been a bit expensive. He's coming with his next delivery. Oh, and that is well played by Ram again. This time it's running towards the fine leg boundary. There's a good chase done by the fielder there. A couple taken again by Ram. Wonderful batting this is, and that's the 100 up for the Avengers. And they've come back really strongly after the 4 wickets that were down very cheaply, and the top of the batsman batting really poorly. 10 overs in just 30 odd runs they were. Another good shot this time. Will that be a boundary? No, that's a good piece of work there in the deep mid wicket region. Just a single. Wonderful fielding that, and a good throw from the deep as well. But Ram is on song. He's playing with a lot of fluency, and Anil Kothai is supporting him really, really well. Both the batsmen have entered their 30s. That's just a single towards the long off. And that's the end of Sunil Punjabi's 4 overs, his quota of overs being bowled. He's bowled really well. The captain there, and then it's the end of the 17th over. The score after 17 overs is .105 for the loss of 4 wickets after 17 overs, and Vishal Patil continuing with his next over. Last 3 overs left in this innings. Absolutely brilliant batting by Ram Mane and Anil Kothai, I beg your pardon. However, if this kind of approach they had taken earlier, the match would have been definitely a bit more closer for the batting team. But 3 overs and 89 needed. An impossible task. Vishal Patil coming with his next over. He's bowled well, but Ram Mane has taken him for some runs, and Ram Mane has been absolutely brilliant. That's a slower delivery coming back for the second. Is a misfield. Could that be a run out chance? And no, he's come back. Anil back on strike. 2 taken by him on the first delivery. Vishal Patil to Anil. What a shot that is. What a wonderful 6 that is. Brute power shown by the batsman there. Rocking on the back foot and hitting it. That was a short delivery and punished. Dealt with strictly and severely by the batsman. Anil now coming into the act. A huge 6. In the deep mid wicket region. He's eyeing the cow corner. What a shot that was. The fielder at the cow corner, just a spectator. Vishal coming with his next delivery. Poor bowling that is, and Vishal stayed doing well and acknowledging his mistake there, the bowler. The keeper saved a definite boundary there. Stop 3 for his team, and that would have hurt as well. That
was a full toss delivery. Way down the leg side, but good wicket keeping by Vishal Sheth throughout the day today. He's done a couple of stumpings as well. Brilliant stumpings those were. Vishal Patil with his next delivery. And this time he hits it towards the long one, and this could be another big six. It's a six, a flat six this time. This is absolutely stunning batting by Anil. And these two players now hitting sixes at will. Just have a look at the kind of shots they are playing. Brilliant power shown by these two batsmen, and what a bottom hand these two players have got, especially Anil. Just have a look at those shots that he's played with the bottom hand power of his arms. Wonderful batting that is. 2 sixes in this over. Could there be a miracle today? The kind of batting they're doing, they're capable of doing that. You just need to keep hitting those big shots. Another good shot played, but this time couldn't connect it well. Just a single. Gurvineet does well. Vishal Patil, very expensive in this over. Already 16 runs scored in this over. 121. Oh, and that's a wonderful delivery. And Ram Mane probably missing the trick there. He was trying to charge and go for a big shot. Probably should have stayed at the crease, and but a dot delivery after a long time. This is wonderful bowling by Vishal after being hit for 2 huge sixes, coming back nicely under pressure. This is the last delivery of the 18th over. Vishal Patil, and this time just a single towards the long on. Probably they don't take that. Anil wants to be on strike and try his luck with few big shots. That's the end of the 18th over. The score after 18 overs is (121 for 4) after 18 overs. Last 2 overs left. Manish Solanki. Manish Solanki, a short delivery and hit over the long on fielder for a huge six again. And that is the reason why Anil was not taking the single on the last delivery of previous over. He wanted to try his luck, and that's his 50. Brilliant batting that by Anil. He's played wonderfully well for his 50, and he's taken 3 wickets as well in the first inning. So absolute brilliance shown by this all-rounder. That's a wonderful shot by Anil Kotha. Comes down the track, but just a single this time towards the long off. The fielder does well. Ram Mane back on strike. They would want to cash in on the spinner as much as possible, but then Manish is a brilliant bowler. He deliberately flights the deliveries. The score is 128. Oh, and this time he misses it. Seems that was an edge. We'll have to see the umpire's decision. This will go to the boundary for 4. And yes, that was a slight edge
Another boundary scored. So 132 now. And Manish bowling really well, but unfortunate this time for the bowler. It runs away to the boundary after getting an edge. Ram Mane among the runs as well again. He's on 42, Ram Mane. Oh, wonderful delivery, and Manish finally has struck. Brilliant bowling that is. Clean bowled Ram Mane. And that is what I was talking about. He never shies away from flighting the delivery, and that's the hallmark of a great bowler. No matter you get hit for a boundary or a six, the spinner must flight the delivery, and that is what Manish has done. All credit goes to him for winning this battle against Ram Mane. Ram Mane has played a brilliant innings of 42. But he'll have to go back to the pavilion now. 5th wicket down. (132 for 5) Avengers. And we'll take a short commercial break. We'll be back soon. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट. मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है. अरे रे सो सैड. सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प. तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ. अब खेलने में मजा आएगा. सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए. पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के. इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है. कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें. Dhruvir Gandhi is the new batsman. Manish to Dhruvir. Oh, and wonderful delivery this time again. What a start to the new batsman by the bowler there. Wonderful bowler he is. Just traps you into the loop. This is the 19th over and the last delivery of this over. Wonderful bowling that is. That's the end of the over. What a wonderful piece of left arm spin bowling we have seen from Manish Solanki. That's the end of his spell as well. And last over now. The score 132. Anil Kotha on strike. The last over of this innings. Rajesh Naidu to bowl. The last 6 balls. Rajesh Naidu. Oh, and that's a wonderful punch there. He's literally playing the jabs and not running. Anil Kotha, he wants to score another big shot probably in this over, or maybe more than that. He's played brilliantly. Credit goes to him. Should have been sent a bit higher up in the order. Could have changed the course of this game, but when he came to the crease, only 10 or 11 overs were left. Not much on the board, so a lot of work to be. Oh, that's a wonderful bowling by Rajesh Naidu. This is good bowling. Anil trying to hit a flick towards the onside, not succeeding. Just a dot delivery. Any which way, he's not running for singles. He just wants to hit the big shots. I've got a feeling he will hit a couple of big shots in this over. Oh, and this time he bowls really well, Rajesh Naidu, inviting the batsman to hit, and what a line he's kept. Outside the off stump, he sensed that Anil is trying to hoik it towards the long on, not allowing the batsman to do that.
a good delivery this time. This could be a single. Dhruvir Gandhi back on strike, and only one run taken, and Anil rotates the strike. Last two deliveries of this over. Rajesh Naidu bowling really well. Oh, that's a wonderful delivery again. Rajesh Naidu doing a wonderful job in the last over. However, the match has already been won by the Just Cricket team. Just one delivery remaining. That's just a single to end the match, and 134 is the final score that they have achieved. The Avengers have lost the match by a huge margin of 59 runs, and Just Cricket has played some really professional and good cricket in this match. And that's the end of the match. We thank all our viewers who have been associated with us on the Paytm First Games app for the Super League match between Just Cricket and the Avengers, and we'll be back with the next match very soon. Thanks a lot for your time and patience, and we take your leave from here now. Good night and take care all. Thanks a lot.